Hey guys, my name is Naisak Thakkar and I am a third year MBBS student at Northern Medical College, Visnagar. So basically this is the first episode of Study with me, and in today's video I am gonna take you throughout my day, what I do, how I study, what I study, and exactly 10 days after, on 11 June my prelims are beginning and I am having my first exam of forensic medicine and toxicology. So till then I need to revise minimum 2 times whole PSM and whole FM. No matter what how much time I have revised forensic medicine, but it always seemed that I don't remember anything. So it was basically my try that to grasp the things in my mind. So I am done with my first Pomodoro session of the day, and I have completed almost 5.5 topics of forensic traumatology. So basically I am using two resources. First is the FFP of Marrow Edition Kit. Another resource I am using is PW for Ray, which contains frequently asked and repetitive questions. So it has the content from the standard textbooks. So I prepare for the PG as well as university both at a time. So done with the first Pomodoro session. Now we'll take a short break for the lunch and then we'll again begin with the study. I tried active recalling as it was very beneficial to me earlier, and I also most focused on the headlines and also kept my rough book near me and uh, annotated in it, so which helped me very much in the active recalling. So now I'm done with the second Pomodoro session of the day, and it's about 2:18, and I have completed almost forensic traumatology. Just intermediate and terminal ballistic part 1 and part 2 are remaining, which I find quite boring topics. Like they are important as well, but I don't know, मैं हर बार इसे पढ़ता हूँ और मुझे हमेशा ये टॉपिक बोरिंग ही लगा है. एंड प्रॉक्सिमल बैलिस्टिक्स मैंने कंप्लीट कर लिया है. So now I will probably have a good nap before starting our third session. So you enjoy some time left and then we will meet again in a few minutes, I can say. So basically I have dropped the planning of take a nap, as I know if मैं सो गया तो मैं 2-3 घंटे के लिए जाने वाला नहीं. So अभी मैं बाहर गया, थोड़ा व्हीकल देख के एक्टिवा लेके मैं राउंड मार के आया और अभी वापस से पढ़ने तो मैं नहीं बैठ रहा अभी, बट मैंने सोचा व्हाई नॉट टू वॉच कॉमेडी शो और अगेन स्टैंड अप टू गेट द फ्रेशन. टिल देन मेरा ये डिवाइस भी चार्ज हो जाए तो रिकॉर्डिंग मैं कर सकता हूँ अच्छे से. सो आई विल वॉच अ शो एंड देन विल गेट बैक टू स्टडी आफ्टर दैट. नाउ इट्स टाइम फॉर द थर्ड पोमोडोरो सेशन ऑफ द डे. सो विल कंटिन्यू. नाउ इट्स अबाउट 3:50. तो ये अब 4 बजे तक ही चलेगा. शुरू करते हैं थर्ड पोमोडोरो सेशन. और बीच में मैं ब्रेक तो बहुत बड़े बड़े ले रहा हूँ. जितना सेशन है उससे बड़ा ब्रेक हो रहा है, बट आई नो मैं इतना कांस्टेंट अगर 45 मिनट्स में पहली बार पढ़ रहा हूँ, मतलब पढ़ा है बहुत बार एग्जाम के आगे, पर बहुत टाइम हो गया तो मेरे आदत भी छूट गई है. तो थोड़ा बैक टू ट्रैक, वापस से ट्रैक पे आते हैं और अभी थर्ड पोमोडोरो सेशन को शुरू करते हैं. I am trying this voiceover and study with me sessions for the first time. So I might do some mistake which you can tell me in the comment box where to improve and how to improve. And if you have any suggestion you can drop that as well. Also we may study together via Discord. So if you have any suggestion regarding that you can also drop in the comment below. Done with the study session 3 of the day. So total 3 study sessions of 45 minutes each, so 135 minutes. So now we will begin with our 4th study session, but I will probably keep it short, just limit it to 30 minutes as I have to go to market to bring some stuff. So first I will be munching on this khakra. We'll see a show for about 10 minutes, and after completing this snacks I will again start the session. Doing this video realized me that कि मैं सिर्फ पढ़ता ही नहीं हूँ, अगर मैं पढ़ने बैठ जाऊँ तो मैं ठान लूँ तो अच्छे खासे टॉपिक शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में कवर कर सकता हूँ. सो ये वीडियो आपके लिए तो हेल्पफुल हो सकती है, बट ये मुझे अपने आप को एज अ सेल्फ रिफ्लेक्शन भी मुझे
session which we kept only of 30 minutes. Like 30 minutes hasn't been completed yet, but I was gonna start the new topic, but it's about to complete, so I thought doing half in this session and half in other session would create chaos in my mind. So I thought to start a new topic from the next session only. So for now, we started FM. From here, forensic traumatology, we completed whole traumatology. We also completed medical jurisprudence, and also we have completed autopsy procedures. From next topic, we will complete postmortem changes. These 4 topics, and if possible, we'll also complete half of the sexual jurisprudence today. As in night, if I complete all this on the plan, then I will also read the further of these topics as well. And after 10 days from today, today is the first day. On 11th, I am having a prelim exam of FM. So let's get back to work. मैं अपना काम निकल रहा हूँ मार्केट का, उसके बाद वापस स्टडी साइड में बैक होम आफ्टर 1.5 आवर, और अभी हम वापस से 30 मिनट का स्टडी सेशन करेंगे. सो आई विल ट्राई टू कंप्लीट मेडिकल पोस्टमार्टम चेंजेस, ये मैं कंप्लीट करने वाली आधे घंटे में. देन इफ अगर अंधेरा नहीं होता है तो आई विल गो फॉर अ रन. So let's see what happens. Till then you enjoy the time lapse and also study. So almost 4 घंटे पढ़ के, 3.5-4 घंटे पढ़ के मैंने अच्छे खासे टॉपिक ऑलमोस्ट 50% जैसा FM पूरा कवर कर लिया है. मेरा टॉक्सिकोलॉजी, सेक्सुअल जुरिस्प्रूडेंस और थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन का पार्ट होता है. आइडेंटिफिकेशन वाला पार्ट मुझे अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें मुझे थोड़ा सा डर लगता है. लाइक मैंने जैसे कि बोला था, बैलिस्टिक वाला मेरे को बोर लगता है. ये इसमें मेरे को थोड़ी एंजाइटी होती है, तो वो मुझे थोड़ा अच्छे से टॉपिक करना पड़ेगा. सो इट्स ऑलमोस्ट 12 in the midnight. I came home at 8 p.m. Then I freshened up and I had my dinner, and then some guests came home and then I was with my friends. So रात को तो मैंने अभी कुछ नहीं पढ़ा है, और अभी मैं पढ़ तो सकता हूँ, बट अभी मेरे को पता है कि अगर मैं पढ़ूंगा तो भी मेरे को कुछ याद नहीं रहने वाला. सो आई थॉट कि अभी मैं जल्दी से इस वीडियो को एडिट कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत ही लंबा फुटेज है. ऑलमोस्ट 3 घंटे का फुटेज हो रहा है, तो मैं इसे एडिट करके अपलोड कर देता हूँ. सो इन नेक्स्ट ब्लॉग वी विल ट्राई टू स्टडी मोर एंड मोर. So that's for this video. If you like this video, hit that subscribe button. If you like the video, hit that like button and subscribe to my channel.